Hi friends, welcome to our channel. आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। में जैसा हम बर्थडेज या न्यू ईयर्स ईव या क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हैं, वी से हैप्पी बर्थडे। बट हैव यू एवर सीन एनीबडी saying happy AIDS day or happy cancer day or for that matter let's take today? कोई नहीं बोलता हैप्पी सुसाइड डे या हैप्पी सुसाइड प्रिवेंशन डे। सो व्हाई एट ऑल इवन दिस डे इज dedicated for the cause, for spreading awareness. Yes, you heard me right. आज के दिन हम ट्राई करेंगे इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने की। सुसाइड इज नॉट अ न्यू टर्म, बट सुसाइड अवेयरनेस इज कंपैरेटिवली अ वेरी लेस टॉक्ड अबाउट टॉपिक। बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरी जान पहचान के मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम ऐसे टॉपिक्स के बारे में क्यों बात करते हो जिसके बारे में लोग जनरली बात करना पसंद नहीं करते या जो अवॉइड करेंगे इन चीज़ों के बारे में बात करना। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज माई एम इज टू स्प्रेड अवेयरनेस, I wish to and I aim to end the stigma and to end the taboo. सबसे पहले ये कहना कि इस बारे में बात क्यों कर रही हो, यही दर्शाता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितना कुछ नेगेटिव है लोगों के माइंड में, या कितना कुछ, या किस तरह के लेवल, किस लेवल पे सुसाइड इस वर्ड से टैबू related है। And if we see medically, most of the cases wherein a person has died of suicide was found to be having one or the other mental health issue. So mental health and suicide go hand in hand, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जिस किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो एट द एंड यही रास्ता अपनाएगा। एंड येस, देर आर वेरी व्हाट कैन आई से, देर आर न्यूमरस फैक्टर्स विच लीड अ पर्सन टू सुसाइड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट सुसाइड। अगर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे तो हम इसे सोसाइटी से प्रिवेंट कैसे कर सकेंगे। Whenever we see a case of a person who's died of suicide, more than 80% of people have been found to have planning it. इसलिए सुसाइड कभी सडनली नहीं हो जाता। यस, कोई एक ऐसा इंसिडेंट ज़रूर हो सकता है जो कि सुसाइड को सडनली ट्रिगर कर दे, पर सुसाइड की प्लानिंग कोई पर्सन बहुत पहले से कर रहा होता है और जिसके वो साइंस भी देता है। अगर हम उन साइंस को पहचान लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछली बार एक मेरे लाइव सेशन में डिप्रेशन के बारे में भी कहा था, सो इट विल बिकम रिलेटिवली ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रिवेंट दिस। And there are many signs, like a person would be, yes, as I told you, found planning or searching for ways to commit suicide, to die by suicide. हमें वो सर्च करने, हम उस पर्सन को
सर्च करने से नहीं रोक सकते, प्लान करने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हम उनका माइंड किसी और चीज़ में डाइवर्ट कर रहे हैं तो वो जो प्लानिंग की साइकिल है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी। एंड स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें सुसाइड को लीड करती है वो वहीं रुक जाएंगी। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट सुसाइड, दैट इज वन थिंग। First of all, to recognize the signs, we have to see what kind of person he is, in what company he is, what all he or she is, conversating with friends and family. कई बार हम देखते हैं कि कोई पर्सन पहले से ही गुड बाइज प्लान कर लेता है, लेटर्स लिखने लगता है, या अनजाने में ही एक दूसरे से बात करते समय द पर्सन बिट्स अ ड्यू, और मे बी ये कह जाता है कि अगर मैं ना रहूँ तो मुझे कोई मिस नहीं करेगा, एंड देयर विल नॉट बी एनी मच डिफरेंस, और मे बी आई एम नॉट नीडेड इन द सोसाइटी. ऑल दिस थिंग्स सिग्निफाई वर्थलेसनेस. बट ये होता है कि अचानक से वो अननोइंगली अपने मन में जो है वो बोल जाता है. But have you ever thought, अगर हम उस इंसान को कंफर्टेबल बना लें कि वो अननोइंगली नहीं, कॉन्शियसली और नोइंगली उसके बारे में अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से बात कर सके, सो वो साइकिल भी टूट जाएगी, प्लस वो पर्सन कंफर्टेबल हो जाएगा आपके साथ में. एंड वंस द ट्रस्ट इज फॉर्म्ड, maybe he or she will share the problem which he is facing or feeling वर्थलेस बिकॉज ऑफ. धीरे धीरे जब ये वर्थलेसनेस की फीलिंग चली जाएगी तो सुसाइड इडिएशन भी चला जाता है. ट्रस्ट मी, ये फीलिंग और सुसाइडल टेंडेंसी जो है, वन थिंग दैट इज प्रिवेंटेबल, सेकेंड थिंग दैट इज टेम्परेरी. ये कितने टाइम के लिए रहेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन ये चला जाएगा ये हम श्योरली कह सकते हैं. पर हमें वैसी स्थितियाँ पैदा करनी होंगी कि उस इंसान के आसपास तो इतना कंफर्टेबल हो कि वो सुसाइडल इडिएशन के थॉट्स उनके मन में से चले जाएं. एंड फैमिली एंड सोसाइटी सपोर्ट इज अ मस्ट फॉर दिस, एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, because step by step it helps in breaking the cycle. And yes, I am not promoting suicide in any way. I am just giving information which would help the viewers to understand what situation or which thoughts lead a person to suicide. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने किसी सुसाइड सर्वाइवर से बात की है कभी? 100% of the suicide survivors will tell you and will have a common point to share with you that thank God वो crisis avoid हो गया. They will be very thankful and they would share their wish to live. So what does it mean? A significant point is, जिस भी इंसान के मन में कभी ना कभी सुसाइड का थॉट आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी जीना ही नहीं चाहता. वो इंसान जीना चाहता है, बस उस क्राइसिस से वो डील नहीं कर पा रहा है उस वक्त, एंड दैट वीकेस्ट ऑफ मोमेंट वो पास नहीं कर पाता कभी कभी. इफ इट ऑल वो कंडीशन पास हो जाए जो एक मोमेंटरी टाइम है, and the coping mechanisms are increased in the way that those coping mechanisms do not lead more stress, but they lead to a situation wherein all these cycles of anxiety, depression or suicidal ideation are cut off and the person starts socializing. तो डेफिनेटली सुसाइड प्रिवेंटेबल हो सकता है. ऑफकोर्स अगर कोई सुसाइड सर्वाइवर है, इसका मतलब उसने वो फेस पास कर लिया है. एंड अगर 100% ऑफ द सुसाइड सर्वाइवर्स एक ही बात बोल रहे हैं कि थैंक गॉड दिस क्राइसिस हैज पास्ड,
thank God the moment had passed, or thank God we had somebody to talk to in that moment. It does signify कि वो चीज़ टेम्परेरी थी, उन्होंने अपने मन की बात निकाल दी, वो फेस चला गया और अब वो उस बारे में नहीं सोचते. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो जीना चाहते हैं. दे आर थैंकफुल दैट दे आर अलाइव. हु वुडंट विश टू लिव? If the problem is surpassed, of course the person will want to live more. यह फीलिंग हमें इंस्टिल करनी है. And in today's time, I mean, in COVID times where there is minimum of personal face-to-face engagement, of course, digital engagement has increased. पर जब हम फेस टू फेस किसी से मिलते हैं, अगर किसी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, किसी ने हमें हग कर लिया, तो हम कई बार ऐसा होता है कि अपने आप ओवरवेल्म होके हमारी फीलिंग्स और हमारे थॉट्स बाहर आ जाते हैं और वो चीज़ें शेयर हो जाती हैं. बट इन टुडेज टाइम वी हैव टू बी मोर केयरफुल एंड वी हैव टू लुक आउट फॉर even more signs. Like I told you, always thinking of suicide or planning for it, or constantly saying goodbyes, or maybe conversating in a way that I am worthless, कोई मुझे मिस नहीं करेगा वगैरह. ये सारे छोटे छोटे साइंस है जो हमने अगर फिगर आउट कर लिए तो हम उस रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम या रूट कॉज ऑफ वर्थलेसनेस तक पहुंच सकते हैं. And once we've reached the root cause, it'll be easier to prevent that and help the person come out of the feeling of anxiousness. You know what? Suicide is the last step that any person would want to take because इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है. Of course, अगर वो person उस चीज़ में fail हो जाता है तो that person becomes a suicide survivor. But why did he or she even come to that point is the main thing. At this point of the time we have to think कि ऐसा क्या है जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहा है या नहीं आ पा रही है, या ऐसा क्या है जिसके लिए the person is seeking the last resort कि बस अब मुझसे नहीं सहन हो रहा, या अब मैं और बेयर नहीं कर पा रहा या कर पा रही. एंड नाउ इट जस्ट ऑल दिस हैज़ टू समवेयर एंड. व्हेन दैट फीलिंग सिंक्स इन, अपने आप सुसाइडल आइडिएशन आती रहती है. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी कॉमन. किसी को भी लाइफ में किसी भी टाइम पे सुसाइडल आइडिएशन आ सकती है. इसका मतलब ये नहीं है कि द पर्सन इज़ फेसिंग एनी मेंटल इलनेस, या इसका मतलब ये नहीं है कि इफ द पर्सन इज टॉकिंग और ट्राइंग टू टॉक अबाउट सुसाइड, he or she is going to commit suicide because maybe he or she wants to share with you, पर उन्हें नहीं पता कि उस पॉइंट तक कैसे पहुँचे. तो हो सकता है कि वो स्टार्टिंग से थोड़ी बहुत भूमिका बांध रहा हो या बांध रही है. तो इसकी स्टार्टिंग तो इसी चीज़ से होगी कि वो बंदा सुसाइड के बारे में बात करना स्टार्ट करेगा. दिस इज द कॉशन. यस, दिस समवेयर सिग्नल्स कि उनके माइंड में कहीं ना कहीं कोई ऐसा थॉट चल रहा है. बट इट requires a great deal of courage to have been able to reach a point wherein you are able to talk it out to somebody. And at this point, if we give them a listening ear, or we as a large community of society help them in reaching out people, maybe we figured out somebody who is distressed, but हम उस इंसान के इतने close नहीं हैं. So indirectly, we can help somebody else who the person is close enough to reach out to them. So the most common signs of thoughts of suicide we've already talked about. How to prevent we've already talked about. And what can I say? A thought that not to make a joke about it.
हमेशा हमारे मन में ये तो ज़रूर आता है कि क्या अगर हमने इस बारे में किसी से बात की तो सामने वाला हमारा मजाक तो नहीं बनाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले ये कहा कि हमें बस सुनना है और इवन रूट कॉजेस को फिगर आउट करना है। इफ़ वी कैन टॉक अबाउट इट, गुड इनफ। इफ़ वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट, वी कैन एटलीस्ट फिगर आउट somebody who can speak to the person who is undergoing these thoughts. We have to respond keeping all these things in mind, because this is a very sensitive topic, and if a person is already getting these thoughts, he or she is already in a sensitive space of mind, a sensitive space of framework wherein वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसे एक लास्ट रिजॉर्ट के अलावा कुछ सामने नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए ऑप्शंस वो खुद नहीं ढूंढ सकता, हमें ढूंढने पड़ेंगे और हमें वही करना है। once that moment of distress is passed, it automatically gets prevented. It automatically gets, I won't say delayed, it is not delayed, it is completely prevented, because now the person would be able to deal with it, would have got the coping mechanism for him or herself wherein he or she can use it the next time ऐसा कोई भी थॉट उनके मन में आता है। तो हमने अगर थोड़ी सी हेल्प स्टार्टिंग में कर दी तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बन जाएगी, प्लस एक ज़िंदगी बच जाएगी। और एक बहुत बड़ा सिग्नल ये भी हो सकता है कि वो पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं देते, बिकॉज कॉन्स्टेंटली दिस थॉट्स ऑफ सुसाइडल आइडिएशन आर रनिंग इन देयर माइंड, सो you will find them not taking care of themselves and not paying attention to their own self hygiene. And sometimes they will directly tell you that I want to take my own life, or I do not want to live, or कुछ दिनों में आप मुझे नहीं पाओगे अपने आसपास, या ऐसी कोई भी चीज़ें। हमें उस वक्त ये नहीं बोलना है कि हाँ तुम बस नेगेटिव बात करते हो। दैट इज़ अ साइन which the person is giving out to you. Of course it is a negative thought, of course it is a negative statement that the person is making, but the positive thing in this is he or she is giving out that sign. What if अगर ये उन्होंने कभी कहा ही नहीं होता और सडनली ये स्टेप ले लिया होता? पर ये चीज़ कभी नहीं होती, बिकॉज सडनली सुसाइड कभी नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप ही होता है, एज पर मेडिकल रिसर्च, एज पर साइकोलॉजिस्ट, एज पर द रिव्यू फ्रॉम द सुसाइड सर्वाइवर्स, एंड एज पर द many cases recorded. All of us have a future, but we do not know what is in store for us. We have to give ourselves a chance. We have to give life a chance to be at least able to know what is in store for us. हम already depression, anxiety, stress इन सब के बारे में बात कर चुके हैं, which might instill the person into a negative फ्रेम ऑफ माइंड। सो मैं आज दोबारा उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करने जा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बताने जा रही हूँ आज के वीडियो में कि सुसाइडल थॉट्स क्या होते हैं, इनके साइंस क्या होते हैं, हम इन्हें किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। We see a lot of people trying to in an attempt to end their life, they sometimes hurt themselves छोटे चीज़ों से, which may not be harmful enough to end their life, but they are just trying out different stuff कि क्या ये तरीका काम करेगा, क्या वो तरीका काम करेगा। तो ये भी एक साइन है जिसे हमें दिमाग में रखना है। And a lot of people tend to believe कि if he or she talks about it, people will not take them seriously. हमें इसी सोच को, इसी टैबू को हटाना है।
Because if they're not talking about it, then also we would blame them कि अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुमने बात क्यों नहीं की. And if they talk about it, we will say कि हम मतलब तुम तो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते हो. Isn't it contradictory in itself? We have to encourage that person to talk about it even more. That will be the start to end the stigma and to end this taboo. People will become more and more comfortable talking about this issue only when they are not made fun of. Generally जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कोरिलेट किया था कि बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया गया है कि मेंटल इलनेस और सुसाइडल आइडिएशन बहुत ज़्यादा कोरिलेटेबल है. If the person is already facing a mental problem, he or she is so much exhausted, so much that he is not able to, respond to his own feelings, his or her own feelings. और many a times उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो क्या फील कर रहे हैं. जनरली इसीलिए देखा गया है कि the time when the person dies of suicide is usually earlier hours of the day. I mean very very early, like 4 o'clock in the morning or later time of night, like after 2 o'clock. So 2 to 5 is the time when most of the cases are recorded. तो ऐसा क्यों होता है? Because वो दिन भर से इतने ज़्यादा exhausted है. Supposing उन्होंने एक दिन decide किया कि okay, this is the day when I would wish to end my life, and he or she will start saying goodbyes to everyone. Or maybe as I said earlier, one of the case is when suddenly कुछ incident हो जाता है and the suicidal ideation is triggered enough to the point कि आप suddenly वो step ले गए. That is another case. But the case wherein there is already a pre-planned thought going on in the mind, उन cases में generally earlier hours of the day बहुत ज़्यादा difficult हो जाते हैं उस person के लिए spend करने के लिए. But since the person is already exhausted, जब वो मोमेंट आता है, अगर वो कुछ सेकेंड्स, वो कुछ मिनट्स बस कोई उनसे बात कर ले तो वो इजीली सरपास हो जाता है. एंड दे बिकम अ सर्वाइवर. We need to recognize this sliding scale. Why I say it's a sliding scale? Because it goes like this and then suddenly falls like that. So it slides. It becomes a peak. The person is at the highest level of anxiety and then suddenly, धीरे suddenly there is a drop. Wherein यहाँ से यहाँ का जो drop होता है, उस बीच अगर कोई आपको सुन ले, so that is a point where suicides are very much possible to be able to prevent it. And we can prevent this together. We can recognize it together. We can work to end the stigma together. And we can help that person to gain worth in life and to gain a high self-esteem together as a society. Trust me, it will give a lot more happiness than doing some materialistic things for someone or gifting someone something. You are gifting a person entire life, entire future. Nothing is bigger than that. So let's take a pledge on this Suicide Prevention Day. Let's take a pledge. We will be more aware. We will talk about it. We will help the environment become more helpful and become more, comfortable. We will help the society to become more
at ease to talk about such topics जिसके बारे में अगर किसी ने मुंह भी खोल भी दिया, बस एक वर्ड भी बोल दिया तो 10 जने खड़े हो जाएंगे ये बोलने के लिए कि इस बारे में बात मत करें। नहीं, हमें ये नहीं करना है। हमें इसी चीज़ को रोकना है, इसी चीज़ को तोड़ना है, इसी साइकिल को तोड़ना है। क्या आप मेरे साथ हैं? So let's take this pledge. We will prevent suicide. Thank you.